to solve the problem of the day, rather to everyone. So today is 24 November 2025, and we are going to solve problem of the day, number 1018, binary prefix divisible by 5. It is an easy mark problem, and it is really an easy problem. Just you should have the knowledge of how we can generate the binary number from the scratch, nothing else. Okay, so these are some steps we should follow when we are solving the question because it helps us a lot. If you are a beginner, then you must follow these steps. So first is you should read the question. You should calculate the expected time complexity by looking at the input size. Okay. You should apply the brute force first. You should not think of the optimal solution first. And then you should see for the scope of optimization or optimal solution. This is how you can improve your problem solving skills as well as it make you more structured. Okay. Now let's read the question first. First we will do our step and read the question. Okay. So question is saying that we are given a binary array nulls. Okay. And we define xi as the most as the number whose binary representation is a subarray. Okay. I told you that subarray continuous indexes, right? So I most significant to MSB to LSB. Okay. Now, for example, if num is given to you 101, then x0 will be 1, x1 will be 2, and x2 will be 5. Okay. Now we have to return a Boolean array, Boolean utensil list, in which we have to tell that xi is divisible by 5. Okay. For example, if we take this array nums 0, 1, 1, now let's come to our notepad. So if we look at this element first, okay, then it is this 0. It represents 0 in binary, in nums. Okay, this is binary, this is nums. Okay, if we look at these first two elements, it is 0, 1, it represents 1 in nums. Okay, and if we look at these three, all elements, then they represent 0, 1, 1, which is 3 in nums. Okay, cool. But now we have to check whether it is divisible by 5, divisible by 5, divisible by 5. If it is, then we have to return 2. If it is not, then we have to return false. Simple question. Okay. Now, okay, everyone must have understand the question. Now calculate the expected time complexity. Our step 2. Expected time complexity. Okay. So expected time complexity. Let's look at the input size. Input size is that nums of len. Okay. Nums of len is greater than and equal to 1 and less than equal to 10 to the power 5. Many people tends to ignore this input size and constrain things, but we don't have to be that person, okay? So in the previous video, I gave you one table in which I told you that if the input size is less than or equal to 10 to the power 5, then our solution must be in O of log n or big O of n log n. Okay. Then only it will not give time complexity and it may be less than this, okay? But it can't be above than this. It can't be O of n square of O of n cube. Okay, it can't be this. It should be in this range only. But I told you that first you can think of a brute force solution so that you can think of optimization. So in solving brute force, you don't have to consider this time complexity, but in the optimization part, you have to consider this like expected time complexity so that you can come to a good solution. Okay. Now come to approach जो बिगनर्स को सबसे पहले आएगी. अगर मैं एक बिगिनर होता तो मेरे अप्रोच में आती कि यार मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, ठीक है, या मैं एक मतलब कि एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है. क्या सबसे पहले क्या आता, मैं एक एरे क्रिएट करूंगा, नम्स क्रिएट करूंगा कि जिसमें मैं नंबर्स को स्टोर कर लूंगा. पहले नंबर तो बना लूँ बाइनरी स्ट्रिंग, बाइनरी एरे से, ठीक है. और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग कर लूंगा, ठीक है. स्ट्रिंग को एम्प्टी इनिशियलाइज कर दूंगा और जैसे एक फॉर लूप चलाऊंगा, इंट नम, ठीक है. जो मेरे को नम्स एरे दे रखे हैं उसमें इसका नाम रख लेते हैं टेम्प, टेम्प रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, जो हमने बनाई है, ठीक है. और एरे दे रखे हैं मुझे फॉर सपोज 0 1 1 जो इनपुट सही दे रहा है, मैं इसमें चलाऊंगा, ठीक है. और मैं क्या करूंगा, एस को मैं पहले पहले ऐड कर दूंगा 0, एस हो जाएगा 0, ठीक है. फिर मैं क्या करूंगा, और इसको एस को कन्वर्ट कर दूंगा, उसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, इंट नम इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट. ये जावा में ऐसे करते हैं, ठीक है. इसको एस को मैं पारसेंट में कन्वर्ट करके नम को चेक कर लूंगा, तो सॉरी इसे हम कुछ और नाम लिख देते हैं, नमी लिख देते हैं. नमी को मैं चेक कर लूंगा 5 से डिविजिबल है तो इसे टेम्प, लाइक इसे मैं बस नम्स को स्टोर कर लूंगा पहले टेम्प में, टेम्प डॉट ऐड नम नमी, सॉरी, ठीक है.
ऐसे ही मैं सारे नंबर पहले टेम्प में स्टोर कर लूंगा, टेम्प में मेरे पास सारे नंबर आ गए, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, देन चेक कर लूंगा कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। अगर है तो ट्रू ऐड कर लूंगा एक दूसरी एरे में, नहीं तो फॉल्स ऐड कर लूंगा। दिस इज हाउ अ बिगिनर विल थिंक, ठीक है। ये भी सही अप्रोच है, ठीक है, बट ये काम करेगी? लेट्स सी दिस, दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज जब भी हम स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा, ठीक है, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा, तो जब भी आप ये ऑपरेशन कर रहे हो एस प्लस दिस इक्वल टू दिस इन पार्सिंग, ये मिला के यार ओ ऑफ एन स्क्वायर बन जा रहा है। बट आपका सोल्यूशन तो ओ ऑफ एन का होना चाहिए। बट सर आपने तो कहा था कि ओ ऑफ, पहले ब्रूट फोर्स में एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम देखनी, हाँ नहीं देखनी, तो अगर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं होता तो चल जाता, बट अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू है, इट विल नॉट वर्क। ओके, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? लेट्स कम टू बेसिक्स, हाउ बाइनरी थिंग क्वेश्चन, लेट्स आस्क वन क्वेश्चन, हाउ बाइनरी numbers are made bit by bit, ठीक है। फॉर सपोज आपको देखा है 0 1, ओके। अब मुझे नंबर्स ना सारे बाइनरी नंबर्स कैसे बनते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर्स आर द विद बेस 2, ओके, सॉरी, ओके, बाइनरी नंबर्स आर विद बेस 2, राइट। बट डेसिमल नंबर्स आर विद बेस 10, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर कैसे बनते हैं? फॉर सपोज एक वैल्यू है, उसमें जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, 0 × 2 + 1। जब भी हम बाइनरी नंबर बनाते हैं तो हम उसे बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 2 से, ठीक है। 0 × 2 + 1, दिस इज 1, हमारे पास क्या है, 1 आ गया। अब ये 1 हम करें, 1 × 2 + 1, दिस इज 3, एंड 1 1 किसके प्रेजेंटेशन में 3 3, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 0 1, ठीक है। सो आपका वैल्यू है क्या, 0, ठीक है। अब मुझे 1 कैसे, ये नंबर 1 है या नहीं कैसे पता चलेगा, 0 × 2, अब ये वाली बिट को ऐड कर दूंगा, +1, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1। अब ये, अच्छा अभी इस वैल्यू का कैसे पता चलेगा, पिछली वैल्यू तो हम पे 1 है, तो इसका कैसे पता चलेगा, 1 × 2 + 0, दिस इज 2, ठीक है। ये सही में 2 की वैल्यू है। और नाउ दूसरी, 2 × 2 + 1, दिस इज 5। अब हम पहले सारे नंबर आ रहे हैं, समझ रहे हो कुछ? हम क्या कर सकते हैं, वी विल क्रिएट अ लिस्ट बुलियन टाइप की, ठीक है, और इसे इनिशियलाइज कर देंगे, देन वी विल रन अ फॉर लूप। पहले हम एक वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, ऐसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, इंट नम इन नम्स, ठीक है, अरे मत प्रेस नम्स, ठीक है, इससे हम इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इंट वैल्यू करेंगे, वैल्यू में हम क्या करेंगे, 2 × दैट वैल्यू, वैल्यू को इक्वल रखेगा प्लस नम, ठीक है। अब वैल्यू को चेक करेंगे, इफ वैल्यू, ठीक है, और एक और से शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, इफ वैल्यू इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलो 5 और लिस्ट डॉट एड वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। So this is how you can write, this is a pseudo code kind of thing, and this will pass all the test cases, pass all the test cases। अब ना बहुत सारे सॉल्यूशंस में आपको लोग ऐसा भी यूज करते हुए देखेंगे कि जहां हम करें ना वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू 2 + 1, या नम नम, लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे वैल्यू 1, ये कर देंगे, मतलब लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज like this is also doing the same thing, value equal to value into 2 + num, this is also equal to same thing, ठीक है। वो इसमें फिर बाद में वैल्यू प्लस इक्वल टू नम को ऐड करेंगे, ठीक है, वो हमने एक साथ डायरेक्टली लिख दिया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सेम, ओके। नाउ लेट्स राइट द कोड प्रोसेस। So what we did is we list boolean answer equal to answer equal to new array list, okay, in value equal to 0 और int, मैंने जो बस बताया वही लिखा, ये कुछ नहीं, नथिंग इज न्यू, nums value to value into 2 plus num, okay, value modulo equal to 5, if value equal to 0, like what we can do, answer value equal to 0, answer dot है, लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न आंसर, बता रहा हूँ,
यस ट्राई रन कर लिया हमने रन टाइम 0 इट पासेस ऑल द टेस्ट केसेस इसको मत इग्नोर इसको अपना इग्नोर किया दिस इज नथिंग मैं दोबारा सबमिट करूंगा तो इंक्रीज हो गई अच्छा, अभी नहीं हुआ बट हाँ इंक्रीज हो जाता है ये भी सॉल्यूशन भी सेम ही कर रहा है आपके नथिंग नथिंग सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ठीक है और जैसे मैंने बताया था वो बाइनरी शिफ्ट वाला तो कुछ लोग ये भी यूज करेंगे सो दिस इज द सेम थिंग नथिंग ठीक है ये भी मतलब करते हैं बट हाँ दिस इज द सेम थिंग ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ जय हिंद आ जाते ठीक है